सो डियर स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर एसआरसी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मेरा जो कोर्स है सम बेसिक कंसेप्ट पे। आज का जो टॉपिक है एंड दैट इज परसेंट कंपोजिशन एंड फाइंडिंग द एम्पिरिकल फार्मूला एंड फाइंडिंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये वाला है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा डिस्कशन 1 दैट इज गोइंग टू बी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स। सो वी आर गोइंग टू फाइंड द percentage composition of compounds, then we are going to go for finding about the empirical formula. Second step will be the empirical formula, and the third one that is going to be the steps to find the molecular formula, and the practice discussion number 4 is comprised of the problem solving. So तीन टॉपिक है, एक परसेंट कंपोजिशन, एक एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के चलते हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटर्मिनेशन. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, बट बिफोर दैट, now can you identify this person? This person is a great motivational speaker और उनका नाम है जिग जिगला and he is an American author. So that is Zig Ziglar. And what is the quote here? You can have anything you want in life. You can have anything you want in life if you can help enough other people get what they want. आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन खाली अपना ना सोच के अगर आप जो पीपल है अराउंड है उनको हेल्प करे कि वो क्या अचीव करने जा रहे हैं अपने लाइफ में, उसमें आपका जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके वो दे, तो आप भी हर कुछ पा सकते हैं. सो व्हेन यू हेल्प अदर्स you get your dues also. That is the rule of law, that is the rule of God, and remember this, and this is being told by a great motivational speaker Zig Ziglar. Let us go to the topic, and the first one about the discussion topic, that is percent composition of compounds. So percent composition of compounds, and दुनिया में there are numerous compounds जो हर रोज हमको दिख रहा है कि डिस्कवर्ड हो रहे हैं, न्यू कंपाउंड्स आ रहे हैं. सो एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ न्यू कंपाउंड्स आर डिस्कवर्ड इन नेचर, मेड इन लेबोरेटरीज, हर रोज. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है कि हर कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है, इसमें कितने परसेंटेज कार्बन है या हाइड्रोजन है, वट एवर दे आर कंप्राइज्ड ऑफ, एंड व्हाट इज द percentage of that elements in that compound. That is the number one question, and going from the percentage of element and going to find the molecular formula of the compound. So it's a journey. This particular lecture is nothing but a journey in finding the percentages of any compound, elements in a compound, and then going to determine through the empirical formula and going to the molecular formula कि इसका molecular formula क्या है. तो यहां पे देख सकते हैं whenever a new compound found in nature or synthesized in the laboratory, the first question to be answered is what is the chemical formula. तो पहला जो क्वेश्चन आंसर करते हैं and that is nothing but what is the chemical formula. यहां पे chemical formula क्या है, इस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला. जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी एक्चुअली वांट टू नो. नाउ टू आंसर इट मस्ट बी एनालाइज्ड, टू आंसर इट मस्ट बी एनालाइज्ड. और केमिस्ट्री में ये जो एनालाइज जो है ये एनालाइज्ड, सो केमिस्ट्री में ये एनालाइज दैट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स. और क्या क्या टू पार्ट्स है आप बताइए, क्या क्या टू पार्ट्स है. So what are the two parts here for analysis? One is the qualitative analysis. So पहला है और वो है qualitative analysis. Second जो है that is quantitative analysis. So first is the qualitative analysis and second one is the quantitative analysis. And what is qualitative analysis? ये क्या है qualitative? इसका मतलब है कि तुम्हारे कंपाउंड में, मैं कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूं, तुम्हारे कंपाउंड में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्या है कि नहीं है, कार्बन प्रेजेंट और एब्सेंट, हाइड्रोजन प्रेजेंट और एब्सेंट, निकल प्रेजेंट और एब्सेंट. So that is about that present or absent. That is not about what is the percentage of carbon in the compound. अगर यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो क्वांटिफाई करना, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. उसका आता है कि परसेंटेज कार्बन कितना है, परसेंटेज हाइड्रोजन कितना है एंड परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है. So qualitative is nothing but detection, whether that is present or absent, and who are present. And quantitative analysis is about
how much amount, quantify how much amount is present, and so that is the quantification. Now you go for this, the answer to answer it must be analyzed. One is the qualitative analysis to find what element it contains, and second, and how much each element, that is quantitative analysis, is present in a given amount of the compound. So ये दो है qualitative and और हमारा क्या है, हम अपने compound में परसेंटेज कार्बन कितना है, मतलब वी आर बेसिकली गोइंग टू द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और हर चीज की एंड क्या होती है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एंड होती है. अगर मैं आपसे पूछूं कि तुमको कितना मिला है, 30 में কত পেয়েছো, 30 তে 30 তে কত ভালো পেয়েছি, তুমি কত পেয়েছো, ভালো পেয়েছি, তুমি কত পেয়েছো, ভালো পেয়েছি. व्हाट डू मीन बाय ভালো পেয়েছি, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. मैं अगर फिर से पूछूं ये 30 में तुमको कितना मिला, उसने कहा कि मेरे को 26 मिला है, मेरे को 28 मिला है, मेरे को 29 मिला है. पहले ये तीन बच्चे बोल रहे थे भालो पेची, भालो पेची, भालो पेची, एंड दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस. और अभी ये बच्चे बोल रहे हैं 26 मिला है, 28 मिला है, 29 मिला है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. So every measurement, the most important part is quantitative analysis, because in the quantitative analysis, the qualitative analysis is already there. The final part is quantitative analysis. Now let us focus here. Let us think about the objective here. As I told you that this class is dedicated for the calculation, the percentage composition, empirical formula, and the molecular formula. Now this is conveniently expressed as the percentage composition of compound. क्या है, quantitative analysis का compound जो है percentage composition of the compound में ये हमने conveniently express कर सकते हैं, which is obtained by identifying the element present and calculating the mass percent of each. क्या element है, that is qualitative, और कितना है, that is quantitative. चलो एक example करते हैं. Now let us focus on an example. A certain colorless liquid found in gasoline contains 84.1% carbon, 15.9% hydrogen by mass. And so that is 84.1% carbon and 15.9% hydrogen. Now you can see that what is the difference here, and this carbon, that is qualitative analysis, hydrogen, that is qualitative analysis. How much, this is quantitative analysis in total. Quantitative analysis in total, इसका मतलब क्या है, what does it mean? That means that 100 gram of compound contains 84.1 gram of carbon atoms and 15.9 gram of hydrogen atoms. So 100 gram of compound contains 84.1 gram of carbon atoms and 15.9 gram of hydrogen atoms. So that is it means with respect to the percentage. Now the end goal, how to find the molecular formula, कैसे कैसे जाते हैं molecular formula में, क्या होता है, पहले percent composition. First we are going to find out the percent composition, and second we are going to find out with the percent composition, I will tell you how to find out that the empirical formula, and after the empirical formula then we are going to find out the final destination, the final aim of this lecture is the finding of the molecular formula. You keep the helicopter view there, because in the nature, in the world, every day, every minute, and there are numerous compounds that is being prepared in the laboratory, and what we want is that we want to know the molecular formula of those compounds. How can we do that? First let us find the percent composition, the quantitative analysis, then let us find the empirical formula, and then let us go for the molecular formula. Now this percent composition of a compound, empirical formula of the compound, and then using the molecular mass and finding the molecular formula of the compound, that I will come how we can do that step by step. Now let us go with respect to this class step by step. Now let us come here, let us now focus one by one on these steps. So one by one on these steps, how to find the percent composition. So percent composition, that is how to calculate the percent composition, that is our first step. Now suppose you are finding the mass percent of an element. ये बहुत easy है कि कैसे आपकी परसेंटेज क्या आई है, आपकी सोचिए आपको 70 मिला है, 100 में आपकी परसेंटेज क्या है, 70 by 100 into 100. वैसे एक कार्बन टोटल में कितने हैं, तो डिवाइड बाय टोटल का आ जाएगा, ऊपर कार्बन का आ जाएगा, इंटू 100 आ जाएगा. वैसे ही क्या है, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इन ए कंपाउंड क्या है, आप देखिए मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड में कितने वो कार्बन है या कोई भी है,
or divided by the total molar mass of the compound. So mass of element in 1 mole of the compound divided by the total molar mass of the compound multiplied by 100. So that should be the case. That should be the case. Isn't that? That should be the case. Now percent composition, आप देख सकते हैं यहाँ पे percent composition, that is n multiplied by the molar mass of the element. एक element का क्या molar mass है और वो element कितने हैं, एक मोल कंपाउंड में कितने हैं, तो n multiplied by the molar mass of the element divided by, so n multiplied by the molar mass of the element divided by the molar mass of the compound multiplied by 100. So that is the percent composition. ये देखिए where n is the number of moles of the compound, moles of the element in 1 mole of the compound, number of moles of the element in 1 mole of the compound. Now let us go with one example. Now let us go with one example. Calculate the percent composition by mass of hydrogen, phosphorus and oxygen in H3PO4. Hydrogen, phosphorus and oxygen in H3PO4. The molar masses are hydrogen 1.008 gram and phosphorus 30.97 gram and oxygen 16.00 gram and phosphoric acid that is 97.99 gram. So ये क्या करना है, percent composition निकालना है कि इसका हाइड्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन का, मीन्स क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है, परसेंट हाइड्रोजन, परसेंट फॉस्फोरस, परसेंट ऑक्सीजन निकालना है. Now these are the given. Hydrogen, that is one, the molar masses are given. Let us go one by one and you can see in the phosphoric acid, यहाँ इन द फॉस्फोरिक एसिड कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है. हर हाइड्रोजन की मास क्या है, मोलर मास 1.008 ग्राम है हर हाइड्रोजन की, एंड सो 3 into 1.008 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास क्या है 97.99 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हाइड्रोजन का आ गया 3.086. Now on the same wise you can do the oxygen one. So you can do the oxygen one. How? That is oxygen one. How many oxygens are there per mole of the compound? And there are 4 oxygen per mole of the compound. So there are 4 oxygen per mole of the compound. So 4, this is 4. So this one is 4 and multiplied by the oxygen, that is 16.00 and divided by 97.99 multiplied by 100, and so that is 65.31% that is coming. And phosphorus you can see here, and there is 1 phosphorus per mole of phosphoric acid, and so that is 1 multiplied by 30.97 divided by total molar mass 97.99 multiplied by 100, and so that is 31.61. Now let us do another one. So this, ये आपको समझ में आया कि कैसे करेंगे, एक मोल में कितने नंबर है उनको n उनको मल्टीप्लाई करो और उसका मास लेके डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसा ही होगा. ये वाला कर सकेंगे. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अमोनिया. नाइट्रोजन का करना है, एक ही नाइट्रोजन है एक मोल में, इसकी मास दी हुई है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही यूज करो और मोलर मास दिया हुआ है. सो कैसा आ जाएगा, ये वाला ऐसा आ जाएगा नाइट्रोजन का, ये नाइट्रोजन का आ जाएगा, एंड बिकॉज देयर इज 1, सो ये 1 into 14 आ गया, इसका मोलर मास 17 है, सो डिवाइड बाय 17 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 आ गया. एंड सो नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का करेंगे कितना आएगा, 3 into जो हाइड्रोजन की मास होगी डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये मास ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया यहाँ पे 3 by 17 into 100, that is 17.6. so 17.6 आ गया. नाइट्रोजन का आ गया ऐसे 1 मल्टीप्लाई करके into 14 by 17 आ गया, 82.4 आ गया, और ये वाला आ गया 3 by 7 into 100, that is 17.6 आ गया. तो ये गया पहला टॉपिक इस लेक्चर में. पहला मैं बात करूं तो सब टॉपिक इस लेक्चर में परसेंट कंपोजिशन समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 2 के बारे में. एक है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाएंगे. मैं हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप करके सिखाऊंगा ताकि आप याद रखें. कंसेप्चुअली आप ब्राइट होंगे तो कोई भी एग्जाम, जेई हो, नीट हो, बोर्ड हो, व्हाटएवर बी द एग्जाम, यू कैन क्रैक इट. टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक मैं डॉक्टर रिसासी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंड यू टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ.